Hello friends, welcome to the second lecture of accountancy, which is for BBA BCom Semester 1 Accountancy and is also useful for 11th and 12th commerce. So today we are going to learn a small topic which is also known as types of account and the rules of debit and credit. So let us start. We will start with types of account. So let us start with types of accounts. Now there are prominently two types of account. First is personal account and impersonal account. So let me start with the flow chart. So types are of two types, personal and impersonal. So these are the two types of account which are present in the accounting language. Personal account are those accounts which are related to some living person, like for Kirti's account or Shreya's account or XYZ Limited's account, etc. Impersonal account which are related to non-living things like purchase account, sales account, cash account, salary account, commission account, etc. Now if we further look into it, impersonal account is further classified into two types. Okay, so we have real account and nominal account. So these are the two types in impersonal account. Real account is the account related to the goods like purchase account, sales account, cash account, bank account, etc. And nominal account are all the other kinds like salary account, commission account, interest account, etc. So these are the different types of account. तो आज हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में. तो मेनली दो टाइप के अकाउंट होते हैं. पहला होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट. अब पर्सनल अकाउंट जैसे नाम से पता चलता है कि पर्सनल अकाउंट यानी कि किसी व्यक्ति का अकाउंट होगा, किसी का व्यक्तिगत अकाउंट होगा, जैसे कि कीर्तिज अकाउंट, श्रेयाज अकाउंट, XYZ लिमिटेड अकाउंट, रिलायंस अकाउंट. ओके, तो ऐसे जो जितने भी लिविंग पर्सन के या फिर कंपनी के पार्टनरशिप के जितने भी अकाउंट होते हैं वो सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं. दूसरा पार्ट होता है इम्पर्सनल अकाउंट. अब बाकी जितने भी अकाउंट है जैसे कि परचेज अकाउंट हो गए, सेल्स अकाउंट हो गए, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, एक्सेट्रा, ये सारे जो अकाउंट है वो इम्पर्सनल में आते हैं. अगर हम लोग उसमें और गहराई से देखें तो उसमें भी दो प्रकार के अकाउंट होते हैं. एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट. अब रियल अकाउंट जो होता है वो सारे गुड्स के रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब आते हैं, जैसे कि परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, एक्सेट्रा. और बाकी सारे जो होते हैं वो नॉमिनल में आते हैं, जैसे कि सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, एक्सेट्रा. जो नॉमिनल अकाउंट होता है, if we were to clarify what comes in nominal account, so all the accounts related to income, expenses, profit and loss comes under nominal account. जितने भी income, expenses, profit या loss के related जितने भी account होते हैं वो सारे nominal account में आते हैं. तो ये थे हमारे types of account. तो mainly कितने हुए? personal, real and nominal. तो इसे अभी हम लोग साइड में लिख देंगे क्योंकि ये बाद में थोड़े बाद में काम आएगा. तो हमारी जो टाइप्स ऑफ अकाउंट थे वो थे पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के पास. रूल्स ऑफ डेबिट and credit. So let us start with this topic, rules of debit and credit. Now there are three basic rules of debit and credit. For any kind of a transaction, we have to follow these three basic rules to determine whether that account would be debited or credited. Now we know that each kind of transaction have two effects, right?
any transaction. Let's take we bought a machine. Let's take a few examples. First is bought machinery of rupees 10,000. Second is purchased goods of rupees 5,000. And third is sold goods to X Limited of rupees 3,000. So let us take these three examples for each kind of scenario. Now for the first example, we can say that two account comes into limelight. First one is machinery account and the second one is cash account, as we are paying in cash. Okay, so these two accounts comes in limelight under this entry. Now in this transaction we have one machinery account and one cash account. Now according to it we can say that machinery is coming inside the business and we are paying cash outside the business. So the flow of machinery is inwards and flow of cash is outwards. Okay, let us say that. Now how can we write it in the journal entry? As the machineries are coming in, we will debit this account. Okay, so this account is debited, so automatically the cash account becomes credited and here our journal entry forms. But what rule did we use? We used the rule of debit and credit, which is debit whatever comes in and credit whatever goes out. So let us write that rule over here. What we have to debit and what we have to credit. Debit whatever comes in and credit whatever goes out. So in this entry, the machinery came inside the business, that's why we debited that account, and cash went outside the business, that's why we credited this account. So this was your first rule of debit and credit, which was debit whatever comes in and credit whatever goes out. These rule normally applies to our real accounts. Okay, तो अभी हम लोग इसे वापस से समझते हैं. तो तीन बेसिक रूल्स होते हैं, उसमें से एक रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट कीजिए और जो जा रहा है उसे क्रेडिट कीजिए. तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि हमने एक मशीनरी परचेज की है 10,000 रुपीज़ की. तो मशीनरी जो है हमने परचेज की यानी कि मशीनरी हमने बिजनेस में हम लोग लेके आए, उसे लेके आ रहे हैं, इसीलिए हमने उसे डेबिट किया. और जो कैश है उसे हमने बाहर दिया है, इसीलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं. तो उस हिसाब से ये रूल लगता है. अब मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट आप देखेंगे तो वो गुड्स के रिलेटेड है, इसीलिए वो रियल अकाउंट के अंदर आते हैं और ये रूल जो है वो भी रियल अकाउंट को लगता है. अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. अभी जो नाउ द नेक्स्ट रूल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. Debit the receiver and credit the giver. So now in this rule what does it say? That whoever receives something we will have to debit their account and whoever is giving something we will have to credit their account. Now if we relate this to the basic rule, debit what comes in and credit what goes out, so according to us we will put ourselves in the receiver's position. So as we are receiving something we will debit it, or whatever we are receiving it would be either from the real account, right? We are receiving goods or we are giving out goods. For example, for this we will take the second entry, purchased goods of rupees 5,000 rupees. So in this the goods are purchased, so the goods are coming in and
the cash is going out. But if we were to purchase it on credit, so that person is a real person, or that company is real company, that is let's say XYZ Limited, we have purchased their goods. So goods are coming in. So we will, as goods are coming in, we will debit that account, right? So what will happen to the other account of that person or XYZ Limited's account? What will happen to it? We will have to credit it because it has dual effect. Now for that, as we are crediting it, we also say that XYZ Limited is giving us goods, right? So credit the giver. From this we can say the next rule comes in the limelight, credit the giver. That's why debit the receiver and credit the giver. For this, these two examples can be related. Let's say that both the goods are purchased and sold to X Limited. ओके, तो अगर हम लोग दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं तो हमें याद होगा कि है ना, किसी भी एंट्री में हम लोग अगर लेते हैं कि कोई एक जो भी अकाउंट होगा, अब दोनों के दोनों रियल अकाउंट नहीं हो सकते, एक पर्सनल अकाउंट हो सकता है, एक रियल अकाउंट हो सकता है. तो रियल अकाउंट के हमें रूल पता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो इस एंट्री में अगर हम देखेंगे कि हमने गुड्स सेल किए हैं, हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं, यानी कि गुड्स बाहर जा रहे हैं. गुड्स बाहर जा रहे हैं यानी कि हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे, राइट. सेल्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे. तो फिर डेबिट किसे करेंगे? क्योंकि हम लोग इसे क्रेडिट पे बेच रहे हैं, इसलिए एक्स लिमिटेड को डेबिट करेंगे. और इसी में यहाँ पे हमारा जो दूसरा रूल है वो लाइमलाइट में आता है कि डेबिट द रिसीवर. क्योंकि एक्स लिमिटेड जो है वो हमारी गुड्स रिसीव कर रहा है, इसलिए हम लोग उसे डेबिट कर रहे हैं. अगर वही हम लोग उससे गुड्स परचेज करते तो फिर क्या होता कि परचेस अकाउंट वो डेबिट में आता, क्योंकि पहले हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, हम लोग गुड्स ले रहे हैं इसलिए वो डेबिट हो रहा है, और एक्स लिमिटेड क्रेडिट हो रहा है क्योंकि उसके डुअल इफेक्ट होते हैं. तो अभी वो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, हमें गुड्स दे रहा है ना, तो एक गिवर है, इसीलिए आता है क्रेडिट द गिवर. सो इससे हमारा जो दूसरा रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, वो लाइमलाइट पे आता है. और ये दिस रूल अप्लाइज फॉर द पर्सनल अकाउंट. ये जो रूल होता है वो पर्सनल अकाउंट पे अप्लाई होता है. तो इससे हमारे जो दो रूल्स है डेबिट एंड क्रेडिट के, वो क्लैरिफाई होते हैं. अब हम लोग नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट रूल. सो द लास्ट रूल एंड द लास्ट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड द लास्ट रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस and losses, credit all incomes and gains. So we have to debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. All right. So let us say that we have to provide salary to our employees for, let's say, 10,000 rupees. So in this transaction, two account comes into limelight, that is salary account and cash account. Salary account is a type of nominal account and cash account is type of a real account. Now according to the real account, the most basic one, debit what comes in, credit what goes out. Now as cash is going out of the business, as we are providing salary, we will credit the cash account. But what will happen to the salary account? It will be debited. Now as salary is an expense, we can say that we have to debit the expense. Therefore debit all expenses and losses. Loss is also a kind of expense that business has to incur, right? When does loss comes into play? When our expenses are greater than our income, that time loss comes in. That's why the expenses and losses are in the same category. So we have to debit all expenses and losses. Let's say we have received an interest on something. So we have received interest, that's why cash is coming inside the business as we have received it. So cash is coming in. So we will debit the cash account and credit the interest account, right? So the interest account is here in this situation is an income or a profit for the business. That's why and according to it we can see that it is being credited, therefore credit all incomes and gains. So this way we can say the third rule of debit and credit is debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. तो अभी हम लोग समझेंगे कि जो तीसरा रूल होता है अकाउंटिंग का वो क्या है. वो है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सारे जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस है उन्हें डेबिट कीजिए,
जितना भी आप कमा रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, उसे आप क्रेडिट कीजिए। तो इसे समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रही हूँ कि जैसे कि आपने सैलरी पे की है, अब सैलरी पे कर रहे हो तो उसमें दो अकाउंट आते हैं, एक सैलरी अकाउंट आता है, एक कैश अकाउंट आता है। कैश अकाउंट जो होता है वो एक रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का तो हमें बेसिक सा पता है कि डेबिट जो आ रहा है, क्रेडिट जो जा रहा है। हम लोग सैलरी दे रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो फिर सैलरी ऑटोमेटिकली डेबिट हो गई। और सैलरी क्या है, एक बिजनेस का एक्सपेंस है तो हम लोग उसे डेबिट कर रहे हैं, तो पहला लाइन तो प्रूव हो गया। अभी दूसरा कि समझो कि है ना, आप कुछ इंटरेस्ट आपको किसी चीज़ के ऊपर मिल रहा है, यानी कि कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है तो हम लोग उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया। अब ये जो इंटरेस्ट हम लोग आ रहा है वो हमारा एक प्रॉफिट है या फिर एक प्रकार का इनकम है, तो हम लोगों ने क्या किया, क्रेडिट किया, तो ये दूसरा वाला भी प्रूव हो गया। तो हमने तीनों के तीनों जो रूल्स है वो हमने देख लिए हैं, तीनों की तीनों प्रूफ भी कर चुके हैं कि कैसे वो चीज़ डेबिट होती है या क्रेडिट होती है। सो वी हैव सीन हाउ ऑल द थ्री रूल्स आर used in the accounting terms. So let me summarize all of this. So we have these three accounts: personal account, real account and nominal account. Personal account are for all the living persons or the companies or partnership firms which has a legal guarantee that they are living. So all those account comes under personal account. All the accounts related to the purchase of goods, machinery, etc. comes under real account, and all the accounts related to our expenses, income, profits or losses comes under nominal account. And for this the rules also apply. So what are the rules? What is the rule for personal, real and nominal? Let us see. For the personal account we have the rule: debit the receiver, and credit the giver. For the real account we have the rule: debit what comes in, and credit what goes out. And for the nominal account we have the rule: debit all expenses and losses, and credit all incomes and gains. So these were the three rules of account, rules of debit and credit, and these three were the types of accounts which we normally come across in our accounting system. So this was all for today. Thank you for watching my video. If you liked my video, please like this video, share your thoughts in the comment section. Share this video with all your friends from BBA and BCom semester 1 from 11th and 12th, and do subscribe my channel. Thank you.